Good afternoon. Last time I was not there. Single sir came and he might have done something. Just tell me whether you people have been able to complete the rotational motion or something left out is still. Huh? Rigid body and the movement of rigid body. Problems based on rigid body. That's it. No moment of inertia. Center of mass already we have covered. But have you done moment of inertia? Have you done angular momentum? Cha. Oh. Then children, it won't be fair for us to leave these two concepts and move towards the topic which has been given this time. Gravitation is any case going to be easy as compared to this ongoing chapter. So let's devote, if not two, then at least one more class here. Let us see how much we will be able to complete today. Okay. If you recall, center of mass I did in my first class, and second class I was completely trying to explain you torque. Okay. In between somewhere mom. These are the concepts only which we were able to discuss. Okay. So I'm assuming that we are just resuming the class once again. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, चूंकि दो तीन टीचर्स अलग अलग तरीके से सबका पढ़ाने का तरीका होता है, therefore sometimes it happens कि लिंक थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना. So you can link now me when I left you last to last class torque. ठीक है. So let's now begin with MOI today. Yes sir. MOI stands for moment of inertia. It is said the recognition of moment of inertia is, इसकी पहचान ये है, it plays similar role as mass does in translational motion. Okay. So moment of inertia is a quantity which plays same role as mass does in translational motion. Same role where? In rotational motion. Okay. It is believed. Okay, we have to understand this, and then we probably have to apply the concept of parallel axis theorem, perpendicular axis theorem to find out the moment of inertia of many objects. Okay. So let's first understand ऐसा क्यों है, why it is just like mass and how it is playing the same role as mass does. Okay. See, in last class somewhere I proved that torque is equal to I alpha. Okay. There I told you that if I compare this expression with this expression, then in place of F, what is there? So torque plays same role as force plays in translational motion. So in place of A, what is there? So alpha plays the same role in rotational motion as the A does in translational motion. अब इस बेचारे ने क्या गलती की है फिर? ठीक है, तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें सारे टर्म्स आपस में करेस्पॉन्डेंस हैं, तो फिर ये करेस्पॉन्डेंस भी एस्टेब्लिश होनी चाहिए. सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो फॉर्मूले से तो ये बात सच होता है कि यस इट डज. और अगर ये सच हो गया फॉर्मूले से, तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अगेन व्हाट मास डज देयर. कहने से कहा व्हाट वाज द रोल ऑफ द मास. रिमेंबर व्हाट मास यूज्ड टू डू इन ट्रांसलेशनल मोशन. व्हाट वाज द जॉब ऑफ मास. मास क्या करता था? It used to give inertia to a motion. Inertia, concept of inertia comes from the mass only. So if a body is heavy, massive, undoubtedly it will have more inertia of rest. Inertia of rest. Because inertia of motion, mass alone cannot be sufficient. I told you that linear momentum is what we use to measure the inertia of motion. So if mass used to bring inertia,
in translational motion, a similar job even moment of inertia should do. And that is how the name moment of inertia has got derived. Because moment has a meaning. When you multiply with the distance with something, that becomes moment. ठीक है, जैसे moment of mass, mom. ठीक है, moment of force is torque. उसमें आप क्या करते हो, F को किससे मल्टीप्लाई करते हो, डिस्टेंस से. सो मोमेंट ऑफ समथिंग हैज अ मीनिंग. सो सिंस इनर्शिया का हमें एक क्वांटिटी यहां तैयार करना था, तो लोगों ने इसका नाम ही रख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, और फॉर्मूला आई की जो डिराइव किया वो इस तरह से सोचकर इमेजिन करके सपने में जैसे डिराइव करते हैं वैसे नहीं, इसके पीछे भी लॉजिक है जो मैं बता चुका हूं. ये एक्चुअली डिराइव नहीं किया, आ गया, इंसिडेंटली आ गया, तो आ गया, इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया. व्हेन आई वाज बिजी इन डिराइविंग दिस, ये कुछ आ गया ऐसे ही. ओके, एम आर स्क्वायर. सो आई इज एम आर स्क्वायर, नेचुरली के जी मीटर स्क्वायर. एंड अब नाउ आई कैन से कि if I have a mass m, I have to rotate about an axis called AOR in a radius r, then this mass will possess a MOE equal to mr square. And what is the physical significance? If this MOE is more, then I need to put more effort, torque will be effort here. To what? To rotate the body. Not only to rotate, also if it is already rotating, then I have to put more effort to stop. Just like mass. ठीक है? So if moment of inertia of a body is more, how it will be more? That is very interesting. At least formula देख के तो लगता है if someone wants to have more MOE, then have more m. And if someone wants to have a same m but still more MOE, then have more r. ठीक है, अभी तक तो इतना सिंपल लग रहा है, बट हो सकता है इतना सिंपल आगे हो ना, क्योंकि देयर आर फैक्टर्स व्हिच माइट बी यूज्ड टू अल्टर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बट इफ यू वांट टू हैव मोर MOE, यू माइट हैव इट, फाइन, बट देन व्हाइल यू आर सेलिब्रेटिंग कि ज्यादा MOE बन गया, डोंट फॉरगेट दैट यू हैव गॉट वन इंपॉर्टेंट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट. एंड व्हाट इज दैट? इफ यू वांट टू रोटेट द बॉडी, नाउ you have to put more effort. So see the significance in physics, because most of the object we have around us, machines, and they actually rotate. There are very few objects I can count on my finger who are left without rotating. Machines and everything, I'm talking about in general, everything in our life full of rotation. And if we have to study something, a quantity where it is decided that more that quantity, more the effort, don't you feel at the back it is the total faith of the machine going to be decided? पता लगा मेरे पास एक मशीन है जो कम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, वो मशीन ही फेल हो गई. क्यों? क्योंकि उस मशीन में जो पुर्जे लगे हैं उनका MOE कुछ इस तरह से, ज्यादा टॉर्क चाहिए उसे चलाने के लिए, तो मशीन फेल. गो बैक, इन्वेंट अनदर इंजन, change something so that you can rotate that. So the mechanical engineering point of view say moment of inertia becomes very cardinal physical quantity, क्योंकि rotational motion इसके बिना बहुत मुश्किल होगा समझना. ठीक है, इतना समझ में आ गया? So now as if now moment of inertia is mr square, so it is depending of a point mass, it is depending on two things, mass itself and the distance of the mass from the axis of rotation. ठीक है, but we hardly get point mass in our life. वो तो ऐसे पढ़ते हैं, शुरुआत में पढ़ाते हैं. ठीक है, so let's have a rigid body then, and then try to understand how to find the moment of inertia. Now how many point masses would be there in a rigid body? Infinite. And every point mass not necessarily is going to be at the same distance. Every point mass not necessarily going to be identical in nature. ये तो बहुत गड़बड़ हो गया. That means for a rigid body we have to be very subjective. We might have a homogeneous rigid body like a ring, where if I fix the axis at the center, every point is not only identical, it is also at equal distance from the axis. Very favorable condition. Take in general, take a stone, take a piece of block,
and then fix an axis somewhere, and then try to find out MOE. See how difficult going to be, because it's even if I use tedious mathematics of calculus kind of thing, it is going to be a huge headache for me to find the moment of inertia of every point mass and then sum them up and then tell the people ye iska MOE hai. It is similar to an example which you used to get in your previous classes, where sometimes teacher might have given you a task. Hopefully I am expecting कि आपके क्लास में ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ हुआ था कि बेटा वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, बट टेल मी हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ जिग-जैग बॉडी. छोटी क्लास, ठीक है. तो नाउ हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ जिग-जैग बॉडी, हाउ विल यू मेजर इट? Okay, I remember that I failed to reply, but teacher, whatever teacher replied, I still remember that answer. Okay, that was out of the box. Okay, what, you know what she said? She said ki just submerge the body into a tumbler which is full of water, and then measure whatever water goes out. That is the volume. So this becomes now, these are the indirect method of measuring something in physics which are very effective. So अभी जो मैं आपको उलझा रहा था, that was a direct method. उसमें जाओगे फंसोगे, आप ही नहीं मैं भी, पूरी दुनिया. So we must now therefore learn mathematically indirect techniques to find moment of inertia, and that is actually the truth. जितने भी ऑब्जेक्ट्स दोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की MOE, क्योंकि अगर वो घूमेगा, अच्छा ऐसा तो नहीं कोई ऑब्जेक्ट घूमने से मना कर देगा क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा है, वो हड़ताल कर देगा, नहीं मैं नहीं घूमूंगी या मैं नहीं घूम क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट. तो कोई भी घूमना तो उसको तुम घुमा दो बस, वो तो घूमेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम गया, इसका मतलब अगर रोटेट हो रहा है तो ओमेगा होगा, अल्फा होगा, ठीक है, टॉर्क होगा, आई होगा. तो आई तो होगा, आप निकाल ना पाओ, दैट्स योर प्रॉब्लम. ठीक है. So we are going today, we are going to confine therefore to study the moment of inertia of rigid body in the pretext. पहले तो कोशिश करूंगा simple कराऊं, then we might find the moment of inertia of some complicated rigid bodies. ठीक है? Is it okay? Let's take a rigid body and begin. So write down moment of inertia of a rigid body. अच्छा, is it a vector or scalar? Before move on, is it a vector or scalar? Tell me. Sure? Sure? ठीक है. Have you heard about tensor? What is tensor? बोलो. What is tensor? Which are both vector and scalar? और विच आर नीदर वेक्टर नॉट स्केलर. ये तो तूने फंसा दिया. एक आंसर एक एंड पे, दूसरे एंड पे है. नहीं, ऐसा नहीं. टेंसर्स आर दोज क्वांटिटी विच सीम्स टू बी वेक्टर बट एक्चुअली दे आर नॉट वेक्टर. दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल देम सूडो वेक्टर्स, भूत वाला वेक्टर, बिकॉज दे appears to be vector, but suddenly when you examine them under the laws of addition and subtraction, they fail. I tell you three major tensors in physics. One is the heat. You can note down somewhere. Tensors, कहीं bracket में लिख लेना. Tensors, T-E-N-S-O-R, tensors. Heat, electric current, moment of inertia. Pressure, चलो ये भी लिख लो. Pressure, ये सारे tensors हैं. हाई क्लासेस में पढ़ोगे. ठीक है. अभी फिलहाल आपकी बात बिल्कुल सही है. आपने जो कहा मैं मान लेता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस लेवल इज स्केलर. ओके, सो इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन. सो कंसीडर अ रिजिड बॉडी. एज यू टोल्ड, आपने बहुत सी रिजिड बॉडी कर ली पिछली क्लास में. तो आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम बॉडी. रिजिड बॉडी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी? वेयर द सेपरेशन बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स same throughout the different type of journey of the motion, whatever you impose, and blah blah blah. So if I have a rigid body, suppose I have decided an AOR, axis of rotation. Okay, I have different masses, M1, M2, M3, R1, R2, R3. Tell me what is the moment of inertia if I go simple way. M1 R1 square
plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus so on so forth. How many masses? Suppose n number of masses, mn rn square. Fine, got it? If it is homogeneous, what is the meaning of homogeneous? All the masses are equal, so I can take m common, okay, and then I can write in bracket r1 square plus r2 square plus rn square. If I multiply and divide by n, then I get this as total mass of the body, and therefore this is m. I don't know what to write this, but किताबों में लिखा हुआ है k का स्क्वायर. हाँ, याद आया. ठीक है, और ये बड़ा सर दर्द है समझना. मैं आप कोशिश करता हूँ आपको समझाने का. I understand it's not that easy to understand, but the k is, as per the book, k is known as रोग, और सचमुच रोग ही है ये. And what is the full form of रोग? Radius of gyration. इसमें तैयार है ना फुल फॉर्म के लिए? मोई, रोग, एवार. रेडियस ऑफ गायरेशन एक होमवर्क है. सबके पास एंड्रॉयड फोन है, घर पे नेट है, घर जाना, गूगल महाराज को ये टास्क देना. ठीक है? क्या? प्लीज फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ गायरेशन ओनली. रेडियस तो पता ही है सबको. आई वॉन्ट योर आंसर नेक्स्ट क्लास में. ठीक है? अगर मैं गायब नहीं हुआ नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट कल तक. ठीक है? गायरेशन की मीनिंग हमें चाहिए आपसे, तो हो सकता है मैं आपको समझा सकूं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है. नो, गायरेशन इज नॉट दैट. ढूंढ लो, गूगल की मीनिंग ढूंढ लो, फिर उसके बाद मजा आएगा डिबेट करने में. तो इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ कि सब लोग एक साथ ही ढूंढोगे. सबका गूगल एक ही है, अलग अलग तो गूगल है नहीं. तो वी विल बी डेफिनेटली डिबेटिंग फ्रॉम अ वन सिंगल पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द बिगिनिंग. सो ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया ये एम के इसको. बट यहाँ फॉर द टाइम बीइंग आई विल टेल यू वन थिंग कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर फ्रॉम द दीज टू रिजल्ट. टेल मी क्विकली, के क्या है? रूट ऑफ इसको इसकी शकल देख के क्या लगता है? क्या कर रहे हो आप? ये स्क्वायर रूट भूल जाओ. स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है उसकी शकल के हिसाब से क्या लग रहा है? यू आर स्क्वायरिंग एंड देन समिंग. यू आर नॉट ओनली समिंग, यू आर फर्स्ट स्क्वायरिंग एंड देन समिंग एंड देन डिवाइडिंग बाय देयर नंबर. सो डोंट यू फील यू आर एक्चुअली टेकिंग द, अब रूट ले लो, यू आर टेकिंग द रूट ऑफ मीन of square of distances of all the point from the AOR. So actually this is RMS, root mean square. So this happens to be RMS of distances. Root mean square of distances. ठीक है? Is it okay? What was the beginning वाला formula moment of inertia का? When I started, when first time I told you what? mr square. What is the end वाला formula? So we are okay. We are still okay. We are not having any conflict as such अब तक. ठीक है? एक rigid body का भी वही आ गया जो कि एक point mass का था. So कुछ तो मतलब निकल रहा है. ठीक है? थोड़ा मतलब निकल रहा है. अगर ये सिर्फ पता लगा लूं कि इवेंचुअली दिस के आएगा कहां पे, तो हो सकता है रेडियस ऑफ गायरेशन में डिफाइन कर सकूं. ठीक है? फिर से पॉइंट मास का समझते हैं. आई हैव अ पॉइंट मास, आई हैव एन AOR. दिस इज द पॉइंट मास, दिस इज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. रोटेट दिस पॉइंट मास अबाउट दिस एक्सिस. It is rotating, apply the force, torque and all that. The moment of inertia is mr square. Okay, I don't have point mass now. I have rather collection of many point masses. Every point mass is started rotating about the same AOR. ठीक है? So can I think of, children listen carefully, can I think of
this rigid body to be behaving now as a point mass. Now don't confuse the center of mass. ठीक है, सर ने भी पढ़ा दिया, मैंने डबल क्लास हो गया. Don't confuse with the center. I'm not talking. Had it been that case, I could have definitely said कि it is the center of mass. उसमें मैं इतना संकोच, इतना घुमा के नहीं बताता, क्योंकि center of mass तो आपको पता ही है कि point where the whole mass supposed to be concentrated and blah 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 blah. So listen me again. Body is rotating. It has many point masses, not single. All of them are moving. Okay, it's a rigid body with a different distance from the AOR. Can we imagine, can we consider the whole body to be behaving like a point mass of same mass? The whole big body 50 kilo wala behaving like a point mass of 50 kilo. This is what I said. Okay? But placed not the way it was earlier randomly, placed at a distance k from AOR. ठीक है, इमेजिन कर लिया सबने अपने दिमाग में, हेलो कर लिया ना. नाउ टेल मी, इस नए पॉइंट मास का उसी AOR के अबाउट मोई क्या होगा? mk स्क्वायर. ठीक है, समझ आएगा? दैट मीन्स फिजिक्स में एक्चुअली पिछली क्लास में सर चर्चा भी कर रहे थे, मैंने देखा था थोड़ा सा वीडियो कि सेंटर ऑफ मास पढ़ाते कि कंसेप्ट क्या सेंटर ऑफ मास का. एक्चुअली जहां भी फोर्स लगाओ लगता है वहीं से लग रहा है. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रोटेशन कोई बॉडी जब करने लगती है तो एक्चुअली वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करती है, as if the whole mass of the body is supposed to be concentrated at a distance k from the axis and call this k as radius of gyration. ये समझ है radius of gyration की. ठीक है, अब ये होता है कि नहीं होता है, दैट्स डिबेटेबल. हो सकता है रियल में प्रैक्टिकली कोई व्हील वगैरह घुमा के हम लोग आगे प्रूव करना चाहें, अगर कभी कर भी सकते हैं. आपके पास भी इतने सारे एग्जांपल रोटेशन के, तो आप चाहो तो देख भी सकते हो ये होता है कि नहीं होता है. बट एक्चुअली डिफिनेशन मैथमेटिकली यही निकल रहा है. ठीक है, कंफ्यूजन इसलिए बच्चों को होता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास से मिलता जुलता डिफिनेशन है, तो थोड़े से कंफ्यूजन. मैं अगेन डिनाइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग कि दैट पॉइंट विल बी अ सेंटर ऑफ मास. नो, इट इज द पॉइंट. राइट डाउन देयरफॉर ROG के आगे लिखना, ROG, it is the distance of a point, it is the distance of a point from AOR, where the whole mass of a body, can be assumed to be concentrated without changing MOI. Can be assumed to be concentrated without altering MOI about the same AOR. Without altering MOI about the same AOR. ठीक है, this is for the rigid body. So now there is no question that if I change the rigid body, I'm going to end up finding again the same result, mk square. So whatever rigid body you choose, the final result is going to be I equal to mk square. Okay, k is going to be little difficult to find. उसका practical aspects है, कोई बात नहीं, उसको बाद में touch करेंगे. Let us now take some symmetrical objects. Some symmetrical bodies. Let us take a ring first. Acha, before I move on, children, let us write two factors, majorly two only factors which affects MOI. Number one, no, I will not now cater to the formula mr square, because if I keep mass same and change the axis of rotation, so
if you have the same mass, suppose mass is different to obvious result है formula, but if you have the same mass, can you still alter the moment of inertia? Yes. Number one, by choosing the axis of rotation. That means if a child says that moment of inertia of a body is blah blah blah, he or she is incomplete here. Why? Because if you not mention the AOR, your information is totally null and void, incomplete. So the first point, moment of inertia depends upon choice of AOR for the same mass. Choice of AOR. Change it, same mass, you will have different MOE. Now, even if I take the AOR same mass, same AOR, I can still alter MOE. What is that way? What is that way? Give me a आधा भरा हुआ बोतल पानी, आधा भरा हुआ बोतल पानी. Okay, if I rotate this about this axis, okay, mass will be same, axis also remains same, but when I rotate, MOE is going to be changed because some of the water is going to be experiencing the centrifugal force, and because of that they will shift towards the end, and therefore the mass which was earlier uniformly distributed along the length, that is now non-uniformly along the length, which will alter. So the distribution of the mass about AOR, which eventually might change if the body is not rigid body. अब आपको कैसा rigid body नहीं है, ठीक है, मैं तो in general discuss कर रहा हूँ. So the second point is distribution of the mass. Distribution of the mass about AOR. ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा. रिंग ले लो एक, एक्सिस बताओ, टेल मी द एक्सिस. अगर सेंटर बोलोगे तो मैं ये ड्रॉ कर दूंगा, बोलूंगा बताओ ये क्या है, मैं कहूंगा बताओ ये क्या है, सारे सेंटर से पास कर रहे हैं. सही सही बताओ, झूठ मत बोलो. So what is this axis? It is the axis passing from the center but also perpendicular to the plane of the ring. So you have to be very clear and crystal clear in recognizing the AOR, axis of rotation. अब चाहे शॉर्ट में लिखना हो शॉर्ट में लिख लो, मैं तो नहीं लिखूंगा, आप बोल दिया मैं आप लिख लो. It is the axis passing from the center of mass and perpendicular to the plane of the ring. All the masses are at what distance from the center? R. So if I consider a small mass dm, what is the moment of inertia of small mass dm? Di. What is that? Dm into r square. Got it? So if the moment of inertia of a small mass is this, then what is the total moment of integral? Dm r square. R is constant, take it out. Dm 0 to m, and therefore what is the answer? So the ring eventually has the same moment of inertia as the point mass. इसमें नेचुरली वो केस नहीं आया रिजिड बॉडी वाला जो मैंने रोग समझाया था, आना भी नहीं था क्योंकि ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन था. लेट अस टेक अनदर मास, डिस्क. व्हाट इज दिस एक्सिस? अगेन सेम एक्सिस passing from center of mass and the plane of the disk. Now if I consider the disk to be made up of so many rings, and every ring has got different radii, definitely, but all the rings have the same center. If this particular ring which I am now drawing, if this particular ring has a mass dm, this is my AOR, and the radius say x, mass dm and radius x. अभी भी निकाला मैंने, किसी रिंग की मोई क्या होती है? तो this particular ring whose mass is dm and radius is x will have moment of inertia. Tell me how much? Di is equal to dm into x square. Got it?
Now since this is the moment of inertia of one small ring only, out of which, okay, so many such rings can constitute the whole disk, and therefore total moment of inertia of the disk would be integral di. That means it is going to be dm into x square. Now tell me whether this is the case of LMD or AMD or VMD. AMD. Why AMD? Because actually it is area where we are catering the situation. Since it is AMD and therefore DM will be, कौन बताएगा? भूल गए. How to relate the densities with the mass? बोलो. DM will be sigma into dA. Got it? क्योंकि sigma will be dm by dA. ठीक है? Lambda dm by dl. Rho dm by dv. So this is x square. Now what is dA here? Area of this ring. If I cut this ring and spread on a table, this will make a strip like a rectangle of length 2 pi x and thickness dx. Alright. So if I do that, then area is very easy to find. dA is 2 pi x जैसा मैंने कहा, and dx is what? And therefore area is 2 pi x into, substitute here, I get sigma into 2 pi x dx, so become 2 pi x cube dx. Take everything out which is constant. Now choose the limit. एक चीज नोटिस की होगी आपने, I am never in a hurry to put the limit. I always wait till the variable get separated. Final result now. X is the variable. X can be minimum equal to 0 and x can be maximum equal to radius of the ring, and therefore the limit is 0 to x cube का integral x power 4 by 4. What is sigma? Mass density. If the total mass of the disk is m, then sigma can be written as m upon pi r square, 2 pi and मल्टीप्लाई क्या होगा, r पावर 4 बाई 4. कट कटा के देख लेना, आएगा हाफ mr square. This is very interesting result. This is very interesting. Half आ गया. I don't want to accept it in this form, because first time teacher told me the moment of inertia is mr square, so I will equate this to mk square, जबरदस्ती. And whenever I do that, I will get the value of k. So this is the method to find k. ये तो आगे आ गया natural result. But if I now ask you what is k for the disk for this particular case, then mk square is equal to mr square by 2, and therefore mm cancel, therefore k is equal to r by root 2. Very interesting result. That means when a disk rotates, disk actually behave like a ring of mass same, but radius r by root 2. अच्छा ऐसा है, पूरा रिपीट करना होगा, तो फिर रब भी कर दिया. Was anything difficult I told? Chalo, anyway, I will repeat, no problem, no issue. Have you understood this? ठीक है? Is it okay? So maybe if I have to apply the brake, then I might press the disk at r by root 2. Why should I press it at r or at the center? I might be a foolish man having zero knowledge of physics, but maybe this concept might lead me to construct a better brake system. Either you call it drum brake or hand brake or the lath brake, whatever. But then I need to just calculate the radius and divide by root 2 and then apply maybe the result which I am going to get is more effective. So concept. Okay. इस केस में तो ये root 2 से डिवाइड हो रहा, किसी और केस में कुछ और हो सकता है.
क्योंकि you never know. Fine. Let's see another case. If I take rod, since they are asking to repeat, let me just repeat quickly in 1 minute. For a symmetrical body, children, I started for a ring. I ask you to choose a ring of uniform mass. Axis of rotation was what? Axis passing from the center of mass and plane of the ring. Because this is, अब आप में से किसी ने पूछा नहीं, पता नहीं, मैं भी बताया नहीं, why I am choosing these axes? Are they the only choices of the axes? No. But then why my natural concentration goes to these axes? Because actually, if you don't fix them, that happens to be the center of mass where the AOR passes through. I told you in the beginning. So let us first find the natural. That's why they are called natural axis of rotation. Sometimes we call natural axis of rotation. Fine. Is it okay? But we can change the axis. Totally up to you. So I took ring, then I took disc. This is the result. Let us take a rod and see how the rod behaves. Third case. Take rod. Now, how many of you feel that this is not a rod, this is cylinder? And what should I say that? You will say that, अच्छा sir, अब ठीक है. So for rod, this is the condition. R is very, very less as compared to length. Okay, that's it. So refill of your pen is a rod, whereas the chalk which the teacher use, the pen which I am using is not very accurately said to be rod, because it is comparable with the length. Okay. So if it is a rod, this is AOR. Suppose at a distance x I choose a mass again dm. So what is the moment of inertia of this mass? dm into x square. Got it? Because this will rotate like a ring. So total moment of inertia will be dm x square. Therefore this is dm. Is it the case of LMD or AMD or VMD? LMD. We can take LMD, simple, because radius is negligible. Since it is LMD, so lambda dx. Got it? Lambda out x square dx. Choose the limit. Choose the limit. Since I have chosen my axis over here, so it would be wrong if I took 0 to L, say minus L by 2, say plus L by 2. We have to cater that. Okay. So if I write lambda here, this is x cube by 3 upper limit minus L by 2 lower limit plus upper limit L by 2. If I substitute, this is m by L 3 bahar, and therefore this is L cube by 8 plus L cube by 8. Ultimately this will come out ml square by 12. This will come as ml square by 12. I am not going to ask you find rho, वो तो आसान हो गया अब. But let us see moment of inertia it changing, and what exactly changing is not the format that always remain mr square form, the number which is factor of that mr square, that keeps changing. Okay, somewhere by 2, somewhere by 12. So if I change the example to say a cylinder, take cylinder, take first hollow cylinder. What is this axis? Call this axis as the, obviously, but what is this axis? Recognize this, passing from of the cylinder and to perpendicular to the
perpendicular radius, you can say, okay, perpendicular to the radius and passing through the center of mass. I can draw another axis which would be different than this, but the name which you gave incidentally is the name of that axis also. That is how I ask you, please be careful. What is this axis? It is also passing from the center of mass, and I can bet that this is perpendicular to the dia. So if it is perpendicular to dia, then it is also perpendicular to the radius. So we have to be careful when you name. So it is passing from the center of mass, plane of the cylinder, because every cylinder has a plane. Every cylinder has two surfaces, plane surface and the curved surface. So perpendicular to the plane. We can also call this natural axis, because if the cylinder rolls naturally, it is about this axis, it will roll. So we call it natural axis. Can I assume this cylinder to be made up of so many rings? फिर तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि if I consider that one such ring has a mass dm, then moment of inertia of that ring is dm into r square, and therefore total moment of inertia is r square common dm integral mass of the cylinder is m 0 to m, and therefore mr square. ये तो बदला ही नहीं, ये तो रिंग वाला ही आ गया. बदलेगा भी क्यों? क्योंकि दोनों फैक्टर में से कोई तो नहीं बदला आपने जो मैंने शुरू में कराया था. ना तो आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदला, आप कहोगे बदल तो क्या नहीं, वही है, रिंग का जैसे था वैसे ही है. Neither you have changed the distribution of the mass, and therefore the result is same. ठीक है? Okay. Consider solid cylinder. अपने आप लिख लो. Solid cylinder का क्या आएगा? Y, because it will behave like कैरम बोर्ड खेलते हो, उसमें जो कैरम बोर्ड के जो स्ट्राइकर्स के साथ ऊपर जो रखते हो आप सारे, वो एक तरह से सिलेंडर बन जाते हैं, सॉलिड सिलेंडर. फाइन. उनका ऑब्वियसली एक एक डिस्क का जो होगा, सारे डिस्क का कंबाइन करके वही निकलेगा mr square by 2. Let us consider lamina now. Plain lamina. What is the definition of lamina? एक पेज फाड़ लो, फाड़ना मत, एक पेज फाड़ लो अपने कॉपी का, तो that behaves like a lamina. ठीक है? So lamina is what? It could be rectangular, it could be square. Okay, just the plane surface. Fine. Having either a square structure or the rectangular structure. So if I get a lamina which is plane, then the moment of inertia about the lamina, about one axis which is passing from center of mass of the lamina. How to find it? अभी मैं लिख के आगे बढ़ रहा हूँ, because I need to apply the perpendicular axis theorem. But the result, if you remember, बताओ, this is L, this is B, mass is m. So what is the moment of inertia about this? m by 12 L square plus B square. ठीक है? It's very easy to find once you know the perpendicular axis theorem. अभी बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ. Take a hollow sphere. वैसे एग्जाम में अगर स्फेयर लिखा हो सिर्फ तो क्या मतलब हुआ? गुड. सो टेक अ hollow sphere. Moment of inertia of a hollow sphere about this natural axis. Two by 3 mr square. Interesting to find. I'm not going to find it. I will be giving you as a homework, but very interesting to prove that this is 2 by 3 mr square. Can you think of the solid hollow sphere to be made up of what kind of a structure? Think of, जैसे डिस्क को मैंने कहा था to be made up of ring. So hollow sphere दिमाग में किस स्ट्रक्चर को रिपीट करके बनेगा? Obviously, ठीक है, ring of different radii, but identically placed about AOR. Okay,
So if I take one ring and fix this position and then try to find out the MOE of this ring about the AOR and then integrate for the whole structure, I might get 2 by 3 MR square. So it's your homework. Okay. So आप करना, मैं रिंग बना के छोड़ दे रहा हूँ. Consider this ring. इसके अबाउट निकालना. इसका पूरा रेडियस r है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. ठीक है, इसको इसे ज्वाइन कर दो, ये r होगा. फाइन, इज इट ओके? अगर ये थीटा मान लूं, ये स्मॉल r मान लो या y, इसे हम x मान सकते हैं. तो x को मैं r साइन थीटा ले सकता हूं और अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लूं तो ये y हो गया. y क्या होगा? r cos थीटा. ठीक है, इसका जो मास होगा AMD की कैटेगरी में आएगा, तो मैं dm को सिग्मा इंटू DA लिख सकता हूं. यहां से यहां तक का सफर आप तय करोगे. इट्स नॉट दैट इजी, बट आप नहीं करोगे फिर कौन करेगा? जेई में आप ही को तो निकलना है. ठीक है, ट्राई इट. If I take a solid sphere, होमवर्क है या नहीं? If I take a solid sphere, then the moment of inertia about this axis is 2 by 5 mr square. Okay, again prove it. Prove it by calculus method, homework. If you stuck somewhere, then please open. I must not name any book here, but it's a wonderful book, Concept of Physics. You can always refer it. It's a book where you get a lot of concept as well as the derivations. Still, if you have a problem, then you ask me. I will tell you. So this is 2 by 5 mr square. What about a cone? Right circular cone. Right circular cone. Why do you call it right circular cone? Bolo? Why do you call right circular cone? Because the length of the cone, this vertex, happens to be perpendicular to the base. Otherwise टेढ़ा कर दो, जैसे कभी कभी बर्थडे वाली टोपी होती है तो उसको थोड़ा टेढ़ा कर दो तो राइट सर्कुलर कोन डजंट रिमेन राइट सर्कुलर कोन. कुछ लोग टेढ़ा जानबूझ के टोपी लगाते हैं बर्थडे में. ठीक है, या आइसक्रीम वाला चाहो तो टेढ़ा कर सकते हो जो कोन होता है. सो दिस इज राइट सर्कुलर कोन. दिस हैज रेडियस से r, मास m. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैपेंस टू बी, अबे भूल नहीं सकता मैं, 3/10 mr स्क्वायर. सर जरा ओपन करना. Just magnify it. और ऊपर रोकना और थोड़ा मैग्नीफाई कर सको. आई थिंक वी हैव डन दिस. Till here we have covered. Today I am covering it. Okay, hopefully I have to cover this also, concept of angular momentum. सर नेक्स्ट पेज एक पेज और होगा जिसमें सिर्फ मोई होगा, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिजल्ट्स होंगे. हाँ, और नीचे जाए और ऊपर आप हाँ ठीक है, 3/10 mr स्क्वायर. ये भी होमवर्क है आपका. How to find the moment of inertia of a random shaped rigid body. This is your homework. Symmetrical तुमने कर दिया. So indirect method मैंने जो बताया था याद है? Directly नहीं कोई मेजर कर सकता. Indirect method. Tau equal to
I alpha. If you know tau, you know alpha, I can be calculated. ठीक है, rotational kinetic energy is half I omega square. If you know omega, if you know RKE, I can be calculated. Many formula where I involves along with the other physical quantities. So directly it is difficult. Indirectly you can always easily calculate. So nothing wrong if JEE has asked 1 year a question like this where 70% children got flattened. In spite of telling you all the concept, see how sometimes the questions becomes tricky. There is a disk, okay, there is a disk of radius r which have been divided into many such segments like one I have shown. One segment which I have shaded here has a mass m, okay. So what is the moment of inertia of this segment about this axis? Lamina is just a surface which has got a defined length and defined breadth. Not necessarily this is going to be rectangular, it could be a square, it could be a rhombus as well, but it is a plane surface which has a defined length and defined breadth. So children, mr square by 2, yes, mr square. जेई लेवल क्वेश्चन तो थोड़ा टफ होगा, इसलिए तो नहीं सोच के बता रहे हो कि थोड़ा सोच लेते, जेई लेवल का क्वेश्चन है, फटाक से बोलो तो दिमाग में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने बता ही दिया 70% बच्चे फ्लैट हो गए थे उस ईयर, तो अगर 20-15 और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है. आंसर इज mr square by 2. Now why? Because actually none of the two factor has changed. Neither have, if I consider, मैं कहता हूं ring disk is made up of by so many rings, मेरा भाई बोलता है no, it is made up of so many strips, क्या करूं, भाई भाई लड़ लूं आपस में, हाँ, दोनों सही बोल रहे हैं, he is also right, it is the way your perception goes, the way you divide. So even this has got division, and if I repeat such strips again and again, I will be at the end of the day constituting the whole disk. So if the whole mass is m and I have divided it into 12 segments, then दिमाग लगता आपका तो समझ में आता कि अगर पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मान लो m था तो mr स्क्वायर बाई 2, चूंकि अब एक सेगमेंट का पूछ रहा हूं तो नेचुरली इसको 12 से डिवाइड करके मास निकाल लोगे, लेकिन अभी तो मैंने इसका मास दे दिया m ना, इसका रेडियस r, इसका मास m, तो एज इफ दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ डिस्क, तो mr स्क्वायर बाई 2, 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 जितने बताओगे उतना कर लूंगा, बाद में क्या करूंगा, सबका सम, r स्क्वायर बाई 2 कॉमन, m जितना होगा सम करूंगा, टोटल मास आ जाएगा. दैट इज व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज ऑल अबाउट. ठीक है, गॉट इट. So moment of inertia depends, again I repeat, on two factors. Number one, the choice of the axis of rotation. Number two, the distribution of the mass. If none of the two changes, whatever you do, the MOE will remain same. Now children, there are axes which are other than natural, and if you learn two theorems, then it is easy to find the moment of inertia about any axis, and the two theorems are Pat and Pete. Parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. So this Pat and Pete becomes
very essential component of this chapter. Okay, parallel axis theorem. And this one is perpendicular axis theorem. कहीं ऐसा तो नहीं मैं थोड़ा फास्ट हो गया आज, या सही है? ठीक है, ओके. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसा नाम है वैसा इसका स्वरूप भी है. इट सेज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट मींस देयर कुड बी टू एक्सिस व्हिच आर पैरेलल. बस यही जान लेता हूं कौन से दो एक्सिस पैरेलल आ गया. सो इफ आई नो दैट व्हाट आर दिस टू एक्सिस, okay, I can easily understand and memorize the theorem. So one of the axis condition, लिखना नहीं है, समझना. One of the axis of the two should pass from the center of mass, so that becomes eventually the natural axis. The other one, your choice, तुम्हारी मर्जी, जहां मर्जी वहां लो, but भूलना मत, the other one should be parallel to the first one, and the first one should pass from the center of mass. So theorem says MOE of a body about an axis which is parallel. Parallel to what? Another axis. Another what? Which is passing from the center of mass is equal to sum of MOE about that axis passing from the center of mass and product of mass and square of the distance between the two axes. Simple. ठीक है? तो if I have a rigid body, मैं लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूं, सिर्फ समझो. If I have a rigid body and I have two axes, one is passing from the center of mass, say call it IG about it, and another is at a distance r. अब इसके अबाउट I निकालना है. ये दोनों पैरेलल है, मास m है, so as per theorem I is equal to IG plus, no need to bother about the proof. And if you want to see the proof, in any case it is available in NCERT and Pradeep or some other books of the text level. But try to understand the theorem once again and then I move on. So condition, there should be two axes. Another condition, one of the two center of mass and both are parallel. Okay, fine. Easy to use it. Easy to use for different cases जो अब तक मैंने करा. For example, आप में से सब लोग जल्दी से मुझे इसकी मोई बताओ. मैं सिर्फ इस थ्योरम का यूज बता रहा हूं. सपोज करो आई हैव अ डिस्क एंड आई वांट टू आस्क यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. पहले तो एक्सिस का नाम बताओ. इट्स अ डिस्क. व्हाट इज दिस एक्सिस एंड व्हाट इज दिस एक्सिस? Parallel to? Parallel to natural axis of rotation. हाँ, ये हो सकता है. Tangential and parallel to the natural axis of rotation. ठीक है? Or you can also say it is an axis tangential and perpendicular to the plane of the ring. And there are so many such axes possible, but all of them will satisfy this same definition. ठीक है? They are parallel. इसके बाद क्या होता है? mr square by 2. So that is my IG. I क्या होगा? बोलो. mr square by 2 plus mr square. Therefore, what is the answer? 3 by 2 mr square. So, what is easy? To rotate a disk from its center or to rotate a disk from its axis, this from an axis which is passing from the rim, sorry. What is easy? In one case you are getting 0.5 mr square, in one case this is 1.5 mr square. So from center it is easy to rotate. Engineer will take care of this. I mean you people, you are also going to engineer. Where do you want to have it? If you have a disk, but you want to have a different assignment given to the disk at different places of the machine, then you have to take care of this. Okay, take a ring, challa, okay, and then put in a finger and then start rotating. This effort will be definitely more as compared to when you Sudarshan Chakra Krishna Bhagwan ki tarah agar udhar kar lo. Effort will always be more.
रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग करके देख सकते हैं, थ्योरम लगा के। जहां भी मोई ज्यादा आएगा इसका मतलब एफर्ट ज्यादा चाहिए होगा। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड पीट। पैट आ गया। पीट जैसा कि नाम है, टेक अ रिजिड बॉडी। पीट समझा रहा हूं, टेक अ रिजिड बॉडी, बट जैसे वहां कंडीशन था, वहां यहां भी एक कंडीशन है। ये पीट सिर्फ प्लेनर बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। थ्री डी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो कहीं नोट कर लो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर थ्री डायमेंशनल बॉडी। पैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, but PEAT is applicable for only two-dimensional body. So consider a rigid body. Obviously, since it is two-dimensional, I can always have a plane of the body. If I have two axes lying in the plane and they are mutually perpendicular to each other, call one as y-axis and another as x-axis. And then imagine another axis, which is z-axis. Then as per PEAT, IZ is IX प्लस IY। इफ एंड बट जो लगना था लग गया है, समझ लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कंडीशन नंबर 1, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेन। कंडीशन नंबर 2, द टू एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, अबाउट दोज टू एक्सिस MOE should be known. One is IX, another is IY. That means if you know, then sum of these two will produce the MOE about the another axis which is perpendicular to both of them. ठीक है, got it? Let's use it. Let's use this PEAT. I want to find the moment of inertia of the disk, but right now I want to find about this axis. Name this axis. This is again a disk. Name this axis. It is tangential. And what else? No. Perpendicular to the natural axis. ये थोड़ा दूर की बात हो गई, दूर मतलब पानीपत सोनीपत की बात हो गई, थोड़ा पास ले आते हैं। ठीक है, so it's a natural axis and lying in the plane of the disk. Okay, any tangent you draw which lies in the plane will satisfy this condition. So I have to find MOE about this axis. I need to draw another such axis. Got it? I need to draw one more axis. Then I need to consider one more axis as a dot circle. Let this dot circle is IZ about this. And this is x-axis and this one is y-axis. Got it? So about this IZ, we have already proved mr square by 2. We have already proved. So as per PEAT, IZ will be IX plus. Incidentally, both IX and IY happens to be the MOE about diameter. And whether this diameter or that diameter remains diameter only. So ID plus ID, that is 2ID. That means ID is mr square by 4. Wonderful. If ID is mr square by 4, then I can apply the parallel axis theorem. And therefore, जो I पूछा गया था, that is going to be IG plus mr square. What is IG here? कौन बताएगा? What is IG here? About this axis, mr square by 4 plus mr square, which is 5 by 4. ठीक है, पेज हो रहा है, एक और पेज होगा। ऊपर करिएगा। कुछ तो समझा देता हूं, कुछ आप चाहो तो फटाफट नोट कर लेना, ये आपका बाद का वर्क है। ऑफ कोर्स
इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एवरीथिंग यू डू इन द क्लास, थोड़ा सा तो काम बाहर भी करना होगा बच्चों. नीचे करिएगा सर, और नीचे और नीचे और नीचे. सो सपोज आई हैव अ रिंग, अबाउट दिस एक्सिस आई हैव यूज्ड व्हिच थ्योरम? पैट. ठीक है, निकाल लेना. आई हैव अ डिस्क कर दिया मैंने. सपोज आई हैव अ रॉड, आई वांट टू फाइंड द मोई अबाउट द एंड, which theorem I can use? Pat. निकाल लेना again. If I have to find the moment of inertia of a cylinder. Now this axis happens to be an axis which is perpendicular to the length of the cylinder, and the moment of inertia about this axis is ml square by 12 plus mr square by 2. It is a hollow cylinder. It can be again derived. Okay, the point which I wanted to explain you, this hollow cylinder actually is nothing but the collection of many rings. If I ask you, take a ring and find the moment of inertia of that ring about the diameter, then what is the answer? 2. So that mr square by 2 is the additional factor apart from ml square by 12, which has to be there because it is just cylinder, but don't forget that it is a rod also. So the rod factor, ring factor. So easy to remember when you convert the same result for another axis. इसको देखना ध्यान से. I have now another axis passing from the tangent to the cylinder. जैसे ये cylinder है, this is the axis. कैसे घूमेगा? ठीक है, इसके पहले ये वाली axis थी. So if this is the axis, then this becomes my IG, and I can use which theorem? Pat. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये IG हो गया जो अभी लिखा मैंने, तो आई कैन टेक दिस एज IG, और इसके बीच में गैप कितना है, एंड देयरफॉर ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mr स्क्वायर बाय 2, ये तो IG हो गया, प्लस क्या करूंगा mr स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या हो गया 3/2 mr स्क्वायर. रटने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आप अभी नोट कर लेना, मैं बता के 2 मिनट दूंगा आपको कॉपी करने के लिए, फिर प्रैक्टिस करते रहना. सर ऊपर करना थोड़ा सा. Suppose I have a solid cylinder. बस. Solid cylinder. So easy to understand. The rod factor, the disc factor. Proof करोगे तो calculus से आ जाएगा. But about this axis, naturally. Suppose I have to calculate the MOE of this structure, which is just the base of a fridge. Okay, and this base of the fridge actually has got little modification. Rather than the कॉर्नर ऑब्जेक्ट जो आपके घर में फ्रिज में नीचे होता है, उसकी जगह मैंने स्फेयर्स रख दिया है, बाकी सब सेम है. तो दीज आर द रॉड्स, और ये 1 2 3 4 स्फेयर्स हैं. ठीक है, और क्वेश्चन है फाइंड द मोई ऑफ दिस स्ट्रक्चर अबाउट दिस एक्सिस. M M M M M M M M सारे M मास के हैं. देयर आर 4 rods and 4 spheres, and they are combinedly making this structure, and we have to find the MOE. You have to do it again, so homework, but before you do it, try to understand one very simple looking concept in physics, which looks simple, but they have got very powerful impact of different concepts, called additive law and subtractive law. Very simple, anybody can understand. What is additive law? Add. What is subtractive law? Subtract. But moment of inertia follows the additive and subtractive rules. Understand करिए कैसे. Suppose I have 2 objects. Okay, separately I know the moment of inertia of this pen about this axis and this pen about this axis separately, and suddenly my boss said कि now you have to constitute an object and join them the way, whatever way you want, join. Now tell me the MOE. I will say very simple. If separately it was I1 and I2, after combining it, it will be I1 plus I2. Suddenly you said इसको निकाल दो, remaining will be I2. एक और रख दिया ले आके कहीं से, एक चिड़िया आके बैठ गई, उस चिड़िया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेटली पता है मुझे, तो बैठने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बना उस चिड़िया वाला ऐड कर दो. सो दिस हाउ द moment of inertia does. Now physics mein you don't have privilege, every quantity doesn't do this, every quantity does not follow the additive and subtractive rules, so you need to note down somewhere.
Moment of inertia follows additive and subtractive rules. Moment of inertia follows additive and subtractive rules. And now I am giving you 2-3 minutes. इसमें जो तुम्हें नोट करना हो नोट कर लो. एटलीस्ट ये जरूर नोट कर लेना क्योंकि ये आपका होमवर्क है. इसका आंसर नोट कर लेना. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर. टेक 2 minutes. अगर ये कहते हैं ऊपर करने को तो ऊपर कर देना. आंसर मत नोट, सोल्यूशन मत कॉपी करो, आंसर नोट कर लो. सिर्फ 764/15, 764/15 mr², where 2r is the length of the rod and r is the radius of the sphere. The answer is 764/15 mr². कुछ नहीं है. मैं ऐसे ही अगर मान लो इतना गेहूं लूं और गेहूं यहां बिखेर दूं और बोलूं बड़ी तेज बनती है तू, जरा काउंट करके दिखाते हो, मेरे तरफ देखेगा ये पागल हो गया लग रहा है ये. अब जरा सोचना इसमें कौन सी मैथ्स और फिजिक्स लगनी है. ऐसा थोड़ी कैलकुलस की बुक निकालेगी, गूगल निकाले, कैसे काउंट करना. सिर्फ लेवर है ये और कुछ नहीं है. अब इनको अगर हथियार डालना है तो डाल दें, लेकिन करना अगर है तो करना पड़ेगा. तो ये सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, आपको तो लगेगा इसमें लेवर मैंने बढ़ाया सिर्फ आपका, सो दैट वो जो कंसेप्ट बताया सिर्फ पैट और पीठ का वो क्लियर हो जाए बस. ठीक है. रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई सीक्रेट सुपरस्टार, देख लिया? देख के आओ, बहुत अच्छी मूवी है. ठीक है, देखा करो मूवी. उसमें क्या हुआ कि टीचर आती है क्लास में तो लड़की कहती है इस खड़ूस को अभी आना था. एनीवे, बीइंग अ प्रिंसिपल मुझे अच्छा नहीं लगा ये डायलॉग कि मेरे टीचर को खड़ूस बोल दिया. लेकिन उसका कहना यह था कि यार अभी भी ट्यून आई है, अब मैं ट्यून को याद करूं या टीचर के पूछे हुए क्वेश्चन को बताऊं. तो उसके दिमाग में दिखा रहे हैं, फिर चल रहा है कि नहीं है ट्यून या क्वेश्चन, ट्यून या क्वेश्चन. कहते ले यार मार ले ट्यून. उसके दिमाग में ट्यून चल रहा है, हाथ बढ़ा दिया उसने और उसको हाथ पे उसने डंडे 3-4 दिए. ठीक है, दिमाग में ट्यून चल रहा था. हमारे टीचर्स के साथ प्रॉब्लम यही है, कभी कभी हम पढ़ाते तो जाते हैं धनाधन, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि यहाँ जो एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, इसके दिमाग कोई ट्यून चल रहा है या वो मोई जो मैंने इतनी देर से पढ़ाया उसके दिमाग कुछ घुसा भी. ठीक है, तो हरदम तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि तैयारी आप जेई की कर रहे हो तो हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है कि थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा समय निकाला जा सकता है. व्हाट्स योर नेम? पैट. व्हाट इज पैट? वेरी गुड. जस्ट टेल मी क्विकली द कंसेप्ट. व्हाट डज इट टेल? एक पैरेलल एक्सिस होगा और एक और एक्सिस होगा जो सेंटर ऑफ मास से जाएगा. जोर से बोलो, डरो मत. ठीक है, फिर अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई कैसे करेंगे? जो पैरेलल एक्सिस का मोई होगा वो बराबर होगा जो सेंटर ऑफ मास से लाइन जा रही उसके प्लस mr², वेयर व्हाट इज r? बिटवीन द टू एक्सिस. आपको मैंने छोड़ा नहीं था, आप सोच रहे हैं कि उनकी तरफ चला गया था. दोबारा आपसे पूछूंगा मैं. ठीक है, वो तुमसे ऐसे पूछ लिया बगल बैठे थे. तो क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे? जो पैरेलल एक्सिस होंगे उनके जो बीच में डिस्टेंस होगी वो r होगी. ठीक है, फिर उसका वो mr² प्लस उसका IG जो सेंटर वाले के अबाउट होगा. ठीक है, व्हाट इज पीठ?
How to apply it? How to apply it? ट्यून वाला केस तो ही मिल गया मुझे. Okay, so how to apply it? How to apply Pete, perpendicular axis theorem? Take a body, take any object. So there's a body. Okay, so what is the condition to apply Pete first? First of all, it should be 2D. Is it 2D? Don't take it then. So take a body which is two-dimensional. So this could be, tissue paper could be the right one. Okay? खाना खा के यहाँ रखा है क्या नहीं? So apply it now. Suppose I have an axis here. And I want to find the MOE about this axis. चलो कैसे निकालें? I need to have two more axes which must pass from the plane perpendicular, इसके perpendicular हो और इनके plane में हो. तो I could take one like this and one like this. So call about one axis Ix, about another axis Iz. Now your knowledge about Z and X axis should be there. Otherwise you might still be in a trouble. पता लगा हमने चूज तो कर लिया X और Z, हमें X और Z ही नहीं आता था. तो पहले चलो X और Z का निकाले, तभी तो अप्लाई करोगे Ix प्लस Iz. पता Ix आए तब तो ठीक है. तो इसलिए इजी बनाने के लिए कोशिश करते हैं जब भी कभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बनाए तो अपने नॉलेज जो नोन फैक्ट्स है आपके दिमाग में उसके टर्म्स में Ix Iy चूज करते हैं. यहां मैं फंस गया, मुझे ऑनेस्टली इसके अबाउट नहीं आती मोई, घूमेगा ऐसे, इसके और मोई नहीं आती, इसके बाद भी मोई नहीं आती. तो अगर मैं इसके पैरेलल एक्स एक्सिस सेंटर से ले लूं, ठीक है, और इसको Iz मान लूं, फाइन, और एक ये ले लूं एक ये ले लूं, दोनों सेम होंगे, स्क्वायर दिख ही रहा है सपोज करो, तो मेरा ये आ गया. तो पहले मैं पीठ यहां लगा दूंगा और फिर पैट यहां लगा दूंगा, तो ये आ गया. ठीक है, इज इट ओके? फाइन. मैं मानता हूं ये टफ है, लेकिन अगर यहां आग लगी हुई है, ठीक है, आग जल रहा है, तो या तो जलो या फिर ये टफ है तो ये करो, कोई बात नहीं, डिपेंड करता है ना सिचुएशन क्या है. फाइन, इज इट ओके? सो आई एम स्टॉपिंग मोई डिस्कशन हियर. कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में हो? आई एम मूविंग ऑन. मोई से रिलेटेड कुछ भी डाउट? मैंने आपको आज मोई बताया, कंसेप्ट बताया, ये बताया कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोई डिपेंड्स, ये बताया, ये सिखाया हाउ टू फाइंड द मोई ऑफ अ रिजिड बॉडी, ऑफ अ सिमेट्रिकल बॉडी एंड चेंज द एक्सिस, देन हाउ टू अप्लाई पैट एंड पीट. इतना ही है, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. एंगुलर मोमेंटम. सर इसे बंद कर दो, क्लोज इट. हाँ हटा दो, ये भी हटा दो. एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. एक ये डेफिनेशन है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. एक डेफिनेशन है L इक्वल टू आई ओमेगा. एक डेफिनेशन है L इक्वल टू R क्रॉस P. I can also write this as L equal to PD. One is Cartesian form, one is polar form. आप में से किसी ने पूछा नहीं, उस दिन मैंने बताया भी नहीं. Cartesian is simply XYZ axis. Polar actually is a coordinate system where we fix a line called reference line and then we choose a point and the coordinate of the point is given as r comma theta, where r is this distance called radius and theta is this angle. Theta is called vectorial angle and r is called the radius vector. ठीक है, fine. In 3D it becomes r comma theta comma phi. In 2D it is r theta. जैसे यहाँ 3D में क्या हो जाएगा x y z. ठीक है, आप इसे मैथ्स में पढ़ोगे अच्छी तरीके से. सो पोलर फॉर्म में PD r क्रॉस P I ओमेगा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. दिस इज क्वालिटेटिव, रेस्ट इज क्वांटिटेटिव. What is the understanding? Understanding is we are going to have a similar quantity of linear momentum. So we have done linear momentum. The job of the linear momentum I told you. I explained you that how Newton thought that inertia of motion content of a body is measured in terms of. So similarly, maybe the angular motion content of a body
is going to be measured by moment of inertia, angular momentum, angular motion content. Okay, the angular momentum is also going to be playing a role which is similar to the role played by the linear momentum in translational motion. So if a body is moving, okay, it will have definitely mass, a velocity, it will definitely possess a linear momentum. Now the question arises that how can a body will possess an angular momentum? Answer, it should rotate. First of all, it should rotate. That means you are trying to say that if a body is moving in a line, straight line, it will not have any angular momentum because it is not having any. So first 3-4 minutes I will take to first make this wrongly stated concept correct. Okay, which is not only your saying, majority of the children have got this perception. Even I used to, जब मैं आपकी तरह था, काफ़ी दिन बाद किसी ने समझाया, आज तक याद है कि not necessarily the body should move in a rotatory motion to have a rotatory motion. Even if a body is moving in a line, it is having a rotatory motion. यही तो बताना है, यही तो बताना है पॉसिबल कैसे. बी देयर, जहां बैठी हो, उठना मत, ठीक है. एंड आई एम मूविंग इन अ लाइन. व्हेन आई मूव इन अ लाइन एंड इफ आई कीप लुकिंग एट यू, बिलीव मी, though I am moving in a line, but for me you are rotating. You do it with somebody else, you will observe this. I am moving in a line, but for me this girl is rotating. So if she is rotating, she is in rotational motion. The reference is going to play a very significant role. And if it is, now if you believe that this is true, then I can find the angular momentum and see how easy to find now. I have a linear momentum, so I have P, mv. I have a perpendicular distance from the girl to the line where I am moving. I am not changing my line, by the way, otherwise the complexity will increase, that's it. But if perpendicular distance is d, then if I can maintain my linear velocity, then my angular momentum about that particular point is going to be fixed, that is mvd. Now let me explain in terms of r. Suppose I am here, so this distance is not perpendicular from this line, so call it r, and take perpendicular distance, say the angle made by this as theta. Okay, if not that theta, then at least r and momentum का angle theta ले लो, momentum and r का, क्योंकि r cross p से मुझे समझाना है. So momentum is this line, r is this, so this angle is theta. So if this is theta, then this d will be r sin theta. This is our hypotenuse. So if d is r sin theta, then I can write pd as pr sin theta. R cross p is rp sin theta. Let me move further. What I have increased r, but I have decreased theta. Now when I decrease theta, I will decrease sin theta. Wonderfully done, because the product r sin theta will remain same. Even if I reach there at that corner, still if I ask you that what is d, you will say the same. And why it's same? Because perpendicular distance is not changing. Yes, theta will change, r will change. I have explained you how a simple linear motion can be thought of as a rotational motion if the point which you are taking as a reference point is fixed, it is not moving with you. और जैसे पिछली क्लास में सर ने काफ़ी डिस्कस किया आपसे, रोटेशनल रिजिड बॉडी में किसी पॉइंट का v ले लेते थे, किसी का 2v, तो किसी एक को फिक्स बना देते थे. तो इवन इफ सपोज दैट इज नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज मी, स्टिल आई कैन हैव सम रोटेशनल इफेक्ट as long as he is not moving with the same velocity with my velocity. Either c will be slow or I will be slow. So r cross p doesn't have I. I'm sorry, it will not have I. R cross p में I कहां से आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ ही नहीं सकता. I am the body. अब भूल जाओ उसे. Look at me. Am I rotating?
Yeah, I'm moving in a line. How can I have I? Because I will possess only when I rotate as a single individual body, which I am not. So I don't have I. So if I apply in this situation L equal to I omega, I will be in the spot of bother. How to apply it? I don't have I. But I have R, I have MV, I know R cross P. So without knowing I, which is MOE, we can find the, so this is a Cartesian form of angular momentum is very, very significant. ठीक है? Unlike this, ये जो मैंने समझाया example, suppose I have a body which rotates. I have a body which rotates. This is a disk. It rotates. Okay, it rotates like this. Now try to apply R cross P. Just try it. You'll be in a spot of bother. Find R. Find P. आप सर्कस लाओगे बोले सर R different point different have different P different क्योंकि obviously distance अलग होगा तो velocity अलग अलग होगी. सेंटर वाला जीरो वेलोसिटी होता है, कल बताया था सर ने. जैसे दूर जाओगे वेलोसिटी लीनियर बढ़ती जाएगी. सर्कमफरेंस वाला सबसे. So R cross P is failing like never before, terribly. So does it have I? Yes, it does have. Will it have omega? Yes, So apply I omega. So there are two wonderful segments of concepts once we touch the angular momentum. I didn't tell you this clearly when I was talking torque and MOE. And now I'm going to support my logic with a very practical example. Very, very practical example. वैसे तो numerical है, कहीं पूछा गया होगा, but it's a very practical example. Suppose this is a round table and this can rotate. And a Superman, which I am not, अभी थोड़ी देर पहले पावर टूटा था, ठीक हुआ है, sorry. Some other person, Superman, runs and jump on the table. I told you this is a round table which can rotate about this axis. He jumps on the table. Tell me the result. After he jumps and become the part of the table, what will happen? The table starts. Now the question can be asked, before jumping, where was the angular momentum? There was not, because man was moving in a linear motion. Simple. He was just running without bothering what will happen. Suddenly he found a table in front and therefore he jumped down. And he now become the part of the integral part of the table. And he finds that, wow, it's rotating. So now there will be angular momentum. There will be I. There will be omega. There is a famous law in physics called law of conservation of linear momentum. Transform this in rotational motion. It will be law of conservation of. Had it not been any angular momentum before the person jumped on, from where does it get generated? A big question mark. Are you finding a law which is very, very true in almost every cases going wrong here? No, sorry. Law still remains true. So this example is a proof that somewhere where even if there is a linear motion occurring, there could be angular momentum is still associated with. Okay? अब इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बन सकता है. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल. यू हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग. It is the collision case. When I jump, I might have done some force on the table. Table might have done reversal. Internally, me and the table as a system, no force. Internal force only. So the case is very good for applying the law of conservation of. So in absence of that, angular momentum remains conserved. Find the angular momentum before I jumped on. Equate that to the I omega. Find the omega. It's a J level question. So what I did here, when I got a body which has I and which has omega, I applied which formula? I omega. When the I was missing, R cross P. So this concept actually in physics called transformation of the Cartesian form of angular momentum to the numerical value of the MOE, where we have to keep applying it wherever it is required. Not always, but whenever. अब जैसे ये table घूम रहा है, suppose man decided to jump out. So there was some angular momentum before he decided to jump out. Now he just went out. Okay, he might have carried with some velocity. So I can find his angular momentum going out
माइनस करके रिमेनिंग बॉडी का आई कैन स्टिल फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी. इट डिपेंड्स कि वो जंप आउट किस तरह से करेगा. जैसे चल रहा था उसी डायरेक्शन में थोड़ा दौड़ के करेगा, रिवर्स करेगा, क्योंकि वो इफेक्ट होगा. अगर वो उसी डायरेक्शन में करेगा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा स्लो कर देगा, अगर रिवर्स करेगा तो उसको और फास्ट कर देगा कूदने के पहले. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. समझ में आ गया? सो नोट डाउन, जस्ट नोट डाउन दैट even if note karo, note, it's very important concept. Even if a body is in linear motion, even if a body in pure translational motion or linear motion, even if a body is in pure translational or linear motion, it can possess a non-zero value of what? Angular momentum. Non-zero value of angular momentum about a fixed point. सिर्फ एक कंडीशन है, that fixed point should not fall in the line of the motion. It can possess a non-zero value of angular momentum about a fixed point which does not fall in the line of motion, which does not fall on the line of motion. So make this diagram. Suppose this is mv, this is the distance d, and suppose body has moved here. Okay, so this theta, this is mv, p vector is equal to mv vector, this is r, so r will be what? D will be r sin theta, so the angular momentum will be r cross p, that is how much? R p sin theta, that is p into r sin theta, that is pd. So when you drive your cycle or the bike or the car, divider of the road, if you watch, that keeps rotating, moving. Little away from the road, there is a cow in the field. If you watch the cow, even the cow rotates, but the velocity of the cow is, rotating velocity is not that big as compared to the divider. Whereas the effect has been observed by one person only who has the same velocity and same momentum. Why is this difference? In one case the angle is going to be more, in other case the angle is going to be less, and that is the reason that when you are walking saying Chanda Mama hello, you will find that the Chanda Mama is going with you all the time because the angle is negligibly small. Distance बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने. साथ साथ चलता है, ध्यान से देख के चलो, आपको लगेगा चांद आपके साथ साथ चल रहा है, जबकि वहां साथ साथ बिल्कुल नहीं चल रहा होगा. कंसिस्टेंट चंदा थोड़ी चल रहा, वो तो चल रहा होगा लेकिन आप डिटेक्ट नहीं कर सकते उस एंगुलर वेलोसिटी को. रोड के डिवाइडर वाला देखो कितना तेज, जैसे लगता है बहुत तेजी से भाग रहा है. ठीक है, क्योंकि देखना एंगल बड़ा होगा, पास है ना इसलिए एंगल बड़ा होगा. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का इफेक्ट वहां आ रहा है ना, तो चूंकि एंगुलर वेलोसिटी का इफेक्ट आ रहा है इसका मतलब रोटेशन हो रहा है. ठीक है, भले ये लीनियर मोशन के फ्रेम से ऑब्जर्व किया जा रहा है. आई थिंक एनफ एग्जांपल आई हैव गिवन टू एक्सप्लेन यू दिस. लेट्स मूव ऑन. आई कैन राइट angular momentum L as I omega, but when you write I omega, it is not going to be equated as R cross P ka mod. Mathematically, though the formula is same, but mathematically writing them equal is terribly wrong, because somewhere maybe this is applicable, that is not applicable. Change the scenario, this is applicable, the other one is not applicable. Okay, so equating is not something which I am telling you. What I am trying to tell you here, I am telling you the transformation, and note down therefore
What is that transformation? From which to which? Transformation of Cartesian form of L to L equal to I omega. Okay, transformation of Cartesian form of L, which is equal to obviously R cross P to I omega. Support this with the example. Write that example of the table. If a man, write example. If a man jumps on a table, if a man jumps on a table which can rotate about its center, which can rotate about its center, and stays there, the table starts rotating with angular velocity omega. The table starts rotating with angular velocity omega. Which can easily be calculated using the above transformation. Which can easily be calculated using the above transformation. See children, how do you calculate it? Using above transformation. See, there is a table. It can rotate about this. The man jumps and becomes the part. Let the mass of the table is m, the mass of the man is m. The man jumps with velocity v. Let the table has a radius r and the table has moment of inertia I. चलो mass table का छोड़ दो. The table has a moment of inertia I. The man has a mass m. The man velocity through which the man jumps on the table is v. So r cross p say before jump. What is MOE? What is angular momentum? बोलो. m v r. समझ आया? Because this perpendicular, so sin theta छोड़ दिया मैंने. ठीक है? वैसे r cross p होगा, but theta 90 है इसलिए. After jump, बोलो, L will be I omega. Now, as per which law? As per law of conservation of angular momentum, LOCOM, I can write L is equal to mvr is equal to I total, I omega. This is I total. Okay. So I total will be I for the disk plus I of the man. Man can be assumed to be a point mass. ठीक है? Center of mass. इतना पढ़ लिया, इसी दिन के लिए पढ़ा था. तो mr square into omega, and therefore what is the answer? mvr upon I plus mr square. That is the answer. ठीक है? One more question. Let's now, शुरू से फर्स्ट क्लास से मैं पेन हिट कर रहा था, कभी कभी घुमा रहा था. ठीक है? कभी रॉड आपने नोटिस किया कि कभी कभी रॉड सीधे चलता है, कभी घूमते घूमते चलने लगता है, कभी. तो टाइम आ गया. लेट अस टेक एन एग्जांपल where we are going to now apply all those concepts of center of mass and moment of inertia and then today's concept of angular momentum and apply them together. एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है? टाइम है ना? 5 मिनट. चलो. A rod of length L
a rod of length L, a rod of length L is placed on a frictionless horizontal table. Is placed on a frictionless horizontal table. Let us assume the mass of the rod be m, and as I told you, length of the rod is L. ठीक है? A small mass m strikes the rod. A small mass m strikes the rod. अब इसको मैं कहीं भी हिट कर सकता हूं बच्चों, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो ना, तो कहीं भी हिट करूं तो रिजल्ट अलग अलग आएगा. एक जगह हिट करूं तो सेंटर पे तो रोटेशनल मोशन होगा ही नहीं, तब ऑब्वियसली बुलेट ये मास और ये दोनों साथ लीनियर चलेंगे. लेकिन उसके अलावा कहीं भी हिट करूंगा तो रोटेशनल मोशन होगा. और संभावना क्या बनती है? आई माइट टेक दिस पेबल स्मॉल मास स्ट्राइकिंग द रॉड एंड देन getting detached from the rod. I also think of this mass piercing into the rod and being the part of the rod. घबरा तो नहीं रहे, घबराने कोई बात ही नहीं है, कौन सी बड़ी बात हो गई. ठीक है, एक केस में वो उसमें चिपक गया जब, तो उसका एग्जिस्टेंस भी लेना होगा, उसकी मोई इफेक्ट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही होता तो फिर क्या बात थी. एक और पंगा होगा, सेंटर ऑफ मास भी, और अगर सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया तो AOR बदल गया, क्योंकि बॉडी फिक्स नहीं है. अनफिक्स बॉडी रोटेट तो करती है, लेकिन किसके अबाउट करेगी? ऑलवेज अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. अब तो नया सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है. तो मैं अभी एडवांस छोड़ देता हूँ और नहीं करता हूँ. ठीक है, करेंगे, वो भी करेंगे, कोई बात नहीं. अभी थोड़ा उसके एक लेवल नीचे, उसको बुलेट को क्या करता हूँ, टकरा के वहीं छोड़ देता हूँ, उसके अंदर नहीं घुसाता हूँ. ठीक है, सो द बुलेट, आई मीन द स्मॉल मास m मूविंग विद वेलोसिटी v strikes the rod at one end. It strikes the rod at one end and stops. It strikes the bullet rod at one end and stops. Calculate. Calculate. Number one, velocity of the center of mass of the rod. Velocity of the center of mass of the rod. Number two, the linear distance. Number two, the linear distance the rod has travelled. The linear distance the center of mass of the rod has travelled during a time the rod rotates, during a time rod rotates by theta equal to 90 degree. During a time rod rotates by theta equal to 90 degree. पिक्चर शुरू हो रहा है, पहला सीन, ये आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, सेंटर ऑफ मास इसका इसी लाइन में मूव करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा और रॉड घूमता जाएगा. सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में मूव करेगा, लीनियर मोशन करेगा सेंटर ऑफ मास, लेकिन रॉड देखो घूम भी रहा है और रोटेट भी कर रहा है. ठीक है, इज इट ओके? टेबल पेन फाइट आप करते हो देखा होगा आपने. तो नाउ if I have to calculate the velocity of center of mass, I have to apply the law of conservation of linear momentum, L'Homme. That says that m into VCM is equal to mv. Got it? And therefore VCM is simple. Velocity of center, first part आ गया. Which law applicable? Law of conservation of linear momentum.
Let's apply law of conservation of angular momentum. Where was the angular momentum before the pebble is striking the rod? mv is the linear momentum. So where is the angular momentum? Imagine, after striking, where is the axis of rotation? Center. What is the distance? L by 2. And therefore, what is the angular momentum? m v L by 2. So I am applying which law? Law of conservation of angular momentum. This is before. What is after? I use the transformation. Got it? What is omega? Because the question has given me a kind of direction. I am working in that direction. I need to actually relate with the distance with the, okay. Now if I have to find d theta, then I can write I d theta is equal to m v L by 2 into dt. Got it? What is VCM? ds by, अब आप कहोगे वही मैंने क्यों नहीं कर दिया? ये क्या था? किसकी? पेबल की. वो नहीं चल रहा है टकराने के बाद. टकराने के बाद क्या चल रहा है? रॉड. उसका ds by dt हमें देखना होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस रिलेट करना है. क्वेश्चन में दिया है हाउ मच द रॉड डिस्टेंस हैज गॉन. रॉड जाएगा मतलब उसका सेंटर ऑफ मास जाएगा, इसलिए मैंने इसको वीक वहीं छोड़ दिया. यहां आ गया, जंप कर गया. ds by dt क्या हो गया? mv by m, एंड देयरफॉर व्हाट इज ds हियर? ठीक है, तो मैं इसको अगर dt निकालूं तो सिंपल m ds यहां रख दो, mv L by 2 m ds अपॉन mv कैंसिल. ठीक है बच्चों, अगला स्टेप आगे आंसर. देयरफॉर I d थीटा इंटीग्रल इज इक्वल टू m L by 2 ds इंटीग्रल. घर जाओ, 0 to पाई बाई 2, 0 to s निकालना था. ठीक है, गॉट इट. कॉम्प्लिकेशंस जो हो मैंने इशारा दे दिया है, उन पे हमें काम करना चाहिए सबको. वी नीड टू वर्क कि उस लेवल तक करना चाहिए इस क्वेश्चन को जिसमें द सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग, MOE इज चेंजिंग, एंड देन फाइंड द सेम क्वेश्चन बट देन फाइंड द आंसर. Thank you very much. We meet again tomorrow.